Hey, good morning, students. Today I am going to continue our previous chapter, that is metals and non-metals of class 8, chapter number 4. So, we have already discussed the physical properties. Today we are going to discuss the chemical properties. So, metals and non-metals differ from each other in their chemical properties also. Let us compare the chemical properties of metals with those of non-metals. They are as follows. Reaction with oxygen. First one है reaction with oxygen. Second one is reaction with water. Third one is reaction with acids. Fourth one is reaction with displacement reactions, and fifth one is reaction with bases. So these are the properties on chemical properties on which we are going to differ the metals and non-metals. So let's start. First one is chemical properties. Now chemical properties of metal and non-metals of reaction with oxygen. Now how metal and non-metal going to react with oxygen? Now metal react with oxygen to form a metallic oxide. जब metal react करता है oxygen के साथ तो वो क्या बनाता है? Metallic oxides बनाता है. These oxides are basic oxides because they react with water to form bases. और ये जो oxides होते हैं वो basic in nature होते हैं क्योंकि ये किसके साथ react होते हैं? Water के साथ react होते हैं ताकि वो क्या बन सके? Base बन सके. Example, magnesium burns in air to form magnesium oxide. Magnesium react with water to form magnesium hydroxides. Let's have an equation. 2Mg plus O2 gives us 2MgO, that is the magnesium oxides. Now MgO plus H2O gives us magnesium hydroxides. Non-metal react with oxygen. This is the reaction with metals. Now non-metals react with oxygen to form a non-metallic oxide. जब metals react करते हैं तो metallic oxide बनाते हैं, non-metal react करते हैं तो non-metallic oxides बनाते हैं. These oxides are acidic oxides because they react with water to form acids. These oxides are acidic oxides because they are react with acids to form acids. Okay. Example, sulfur burns in air to form sulfur dioxide. Sulfur air में burn होता है क्या बनाने के लिए? Sulfur dioxide. Now sulfur dioxide react with water to form sulfurous acid. और उसके बाद जब sulfur dioxide react करता है sulfur water के साथ तो sulfurous acid बनाता है. See, S plus O2 gives us SO2. Now SO2 plus H2O gives us SO3. So these are the reaction with oxygen of metals and non-metals. Now let's take another example. In this reaction with water is going to be discussed. Now metal react with water to form metal hydroxides and hydrogen. जब metal water के साथ react करता है तो क्या बनाता है? Metal hydroxides and hydrogen बनाता है. Example, sodium react with water to form sodium hydroxide and hydrogen. जैसे कि एक सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाता है. ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं. मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन. Mg plus H2O gives us MgOH, that is magnesium hydroxide plus hydrogen. Now what happen when we are going to react with the water? Non-metals do not react with water. Non-metals कभी भी water के साथ react नहीं करते हैं. Reaction with water. Metal reacts with acid to form metallic salts and hydrogen. Metal जब acid के साथ react करते हैं तो metallic salts and hydrogen बनाते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं zinc की. Zinc react with dilute hydrochloric acid. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि acid के साथ react कर रहा है तो क्या बना रहा है वो? zinc chloride and hydrogen. इसी तरीके से अगर हम बात करें मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ. सो सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रो ऑक्साइड. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर का. इसको हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड of metal and non-metal.
let's have in some more example like how we can define the reaction of metal with acid. Now metal plus acid gives us metal salt plus hydrogen. जब metal और acid को हम react करते हैं तो वो हमें क्या देता है, metal salt plus hydrogen. एग्जाम्पल लें तो Mg plus HCl gives us magnesium chloride plus hydrogen. Aluminium plus HCl gives us aluminum chloride plus hydrogen. इसी तरीके से हम बात करें मेटल की बेस के साथ, तो मेटल और बेस जब रिएक्ट करते हैं देन इट विल गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस sodium hydroxide, that is NaOH, gives us sodium aluminate, that is NaLO2, that is plus hydrogen. तो हमें क्या दे रहा है, वो salt दे रहा है. It is a salt composition and it is hydrogen gas. So reaction of metal with base, when metal is going to be react with base, it gives us salt plus hydrogen gas. Now what is displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही समझ में आ रहा है किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट करना, मतलब एक दूसरे की प्लेसेस को चेंज करना. तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे कि एक आयरन नेल है जिसको हमने एक ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया. अब क्या हुआ इस रिएक्शन में ओवरऑल, तो लेट्स हैव एन केमिकल रिएक्शन. आयरन plus copper sulfate solution. Here is that. Now it gives us what? Iron sulfate plus copper. That means what could displacement mean? मतलब displacement का मतलब क्या होता है? An element replaces another in a compound. Now which element is going to be displaced and which? किसने किसको डिस्प्लेस किया? Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया. दैट मीन्स आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया. Why could this element displace the other? इसने एक दूसरे को डिस्प्लेस क्यों किया? क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए. मतलब हमें इससे समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं. जैसे कि Fe plus CuSO4 gives us FeSO4 plus copper. Let's have some more chemical equations. हम कुछ और केमिकल इक्वेशंस देखते हैं, जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. सोडियम प्लस जिंक कार्बोनेट गिव्स अस सोडियम कार्बोनेट प्लस जिंक. मैग्नीशियम प्लस आयरन ऑक्साइड गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस आयरन. ऐसे ही गोल्ड प्लस कॉपर कार्बोनेट गिव्स अस गोल्ड प्लस कॉपर कार्बोनेट. नाउ we discuss all the properties, chemical properties of this chapter. That is, first property is how it is going to be react with water, how it is going to be react with oxygen. When it is going to be react with oxygen, if gives us magnesium oxide, and that magnesium oxide is going to be react with water, it gives us magnesium hydroxide. So second one is how is going to be react with water. When it is going to be react with water, then it will give us what? It will give us sodium hydroxide. That means it will give us metal hydroxide and hydrogen. So it is not going to be react with water at all. And reaction with acid and base is already we discussed how it going to be react with acid and base. When reaction of metal with acid gives us metal plus acid, which gives us metal salts plus hydrogen. Now the next equation, reaction of metal with base is metal plus base gives us salt plus hydrogen gas. And in the last but not the least, हमारा last topic था displacement reaction, how the reactions is going to be displaced. So highly reactive metals are going to be displace the less reactive metals. So these are the displacement reactions. We are having the displacement reactions. So these are the different type of displacement reactions. So students, here we complete our whole chapter. So till then students, bye bye and take care.